Okay, good morning. We would like to begin with a new chapter, which is limit state of collapse, shear and torsion. Previously, what we have discussed is the limit state of collapse. We have discussed, but it was regarding the flexure or bending. Okay. We have already discussed कि limit state के अंदर what are the other concern that we will be discussing right in the first lectures. Okay, you can revise it if you want. Okay, so in this regard, what actually we are going to do, let's say, before that, the contents are concept of shear stress in concrete, behavior of behavior of reinforced concrete under shear, ठीक है, nominal shear stress, critical section for shear design, design of shear, and what is the procedure regarding the shear reinforcement. Okay, so those things we'll be discussing one by one. As far as this part of the lecture, we'll be dealing with three concept out here. Okay, till nominal shear stress, and in the next class we'll be doing 4, 5, 6. Okay, so before going to that, let's see. Okay, what you are seeing in this picture right now is that there's a beam of this kind. We'll not go into the details of the experiment, but you are seeing a beam out here, and the beam is loaded. Take care, the beam is loaded, definitely. And one more thing, what we can say, there is support also. There is support also. Okay, if you can see it clearly, these are the support, this is the beam. And if you see it very carefully, there are certain cracks that are developing. Okay, ये वाला crack, this crack I am talking about, this crack. Okay, there's another one. There's another one out here. Okay, here, and so on. Now, why this is happening, we'll be studying in the in the discourse. Okay, why this is happening? Why is it this pattern? It's very important to understand this part so that while designing a beam, this can be taken care of. Okay, because whatever we have designed till now, मतलब हम लोगों ने डिजाइन पहले क्या किया था, MU के लिए हम लोगों ने डिजाइन किया था, ठीक है, ASC निकाला था. This is for the flexure I am talking about. कि अगर moment, there is a particular moment, and by providing certain reinforcement out here, ठीक है, reinforcement out here, you can deal with this moment. But in the entire beam, there will be shear also. और shear के लिए भी there will be failure, so which we must prevent. Okay, okay, let's see. Okay. So the first thing what we'll be trying to understand, there are few points which we'll be discussing, is regarding the shear stress in concrete. Now I want to give you one this thing regarding. It is also dependent on, okay, it is dependent on something of this kind. Ki, whatever theory we have studied before in mechanics of solid में हम लोगों ने shear stress के बारे में पढ़ा था, ठीक है.
shear stress के बारे में पढ़ा था, shear force के बारे में पढ़ा. It is denoted by V. Okay, shear force is denoted by V. Okay. So those whatever we have studied, मान लो कि we have studied a bending formula. मान लो कि we have studied the bending formula M by I, F by Y, E by R. Now this entire thing is regarding why it is for homogeneous material. Okay, it is for homogeneous material. These are the assumptions that we take in the mechanics of solid lecture. But the problem is what, like I said, your concrete is not homogeneous. It is not homogeneous. So you have to modify the theory a bit. Okay, we have to modify the theory a bit. Let's see what are the contents out here. Any RCC member is subjected to, if it is subjected to bending moment, it is usually accompanied by traverse shear, axial force, or torsion. Okay, this thing, these two will be discussing. Well, these two, traverse shear and torsion, will be discussing in this chapter. And axial force, like I said, if it is an RCC member, मान लीजिए कि it is very easy to explain in a column. ठीक है, अगर column हो गया, beam मतलब column, you understand, if this is the beam, these are the columns. Okay, the column में it is possible कि the load is through the axis. So this is the axial force I am talking about. Now any RCC member which is subjected to bending moment, will be accompanied, bending moment तो होगा ही, other than that traverse shear, axial force और torsion भी होगा. Okay, so that is the first point I am talking about. Second, the problem with shear failure is, इसमें बोला गया है, shear failure occurs suddenly with little or no advance warning at all. ठीक है? So by that I mean कि like we have studied in flexure, जो flexure में पिछले chapter में पढ़े हम लोग, तो क्या होगा? It will give you a warning if it is an under reinforced. If it is an under reinforced section, so what will happen? It will give you a warning. वो sudden नहीं fail होगा. Why? Because the steel will fail first. Steel will fail or yield first. So by then you will be getting enough time to save yourself. But the problem is with the shear failure. Shear failure will occur suddenly. Okay? Suddenly. So we should be very careful while designing the shear failure. That's what I'm talking about. Okay. Next, shear associated with varying bending moment is called flexural shear. ठीक है? अगर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, एक पर्टिकुलर मान लीजिए एक पर्टिकुलर बीम में, if there is a beam out here, ठीक है, ठीक है, and मान लो कि there is a support, simply supported, तो आपका बेंडिंग मोमेंट कैसा बनेगा? If you remember, it will be something of this kind. अगर point load हो तो we have already studied these things, which is क्या था? WL/4. ठीक है, तो बेसिकली ऑल द बेंडिंग मोमेंट आउट हियर आर डिफरेंट. इसका वैल्यू अलग है, यहाँ 0 है, दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस वैल्यू इज समथिंग डिफरेंट, हियर इज 0. सो एनी स्ट्रक्चर विथ अ वेरिंग बेंडिंग मोमेंट, shear also is associated, and those shear is known as flexural shear. These are just the points that you should remember so that later on we can use it. Okay. Now, whenever you are designing beam, we design so that it fails under bending. Similar, we have talked कि हम लोग को जो भी डिजाइन करेंगे, whatever we have designed, we want the beam, if it fails, it should fail under bending. It should fail under bending, not shear. हम लोग नहीं चाहते कि शेयर में फेलियर हो. क्यों? क्योंकि बेंडिंग में फेलियर होने से क्या होगा? आप लोग को एक इट विल नॉट बी सडन.
It will not be sudden. It will give an warning. But shear failure होने से क्या होगा? Sudden होगा, which is very dangerous. Okay, we do not want shear failure. So whenever you are trying to design a beam, we consider कि if it fails, it will fail under bending. Uh, bending only, nothing else. Okay, let's move on. Next is the distribution of stress. Here we'll be talking of only the homogeneous material. Homogeneous material मतलब एक example दे सकता हूँ steel beam का, ठीक है? Steel beam में it is expected that कि all the entire member will be composed of only steel properties only, ठीक है? जैसे RCC में आपका steel भी है, concrete भी है, not like that. That is not a homogeneous, but for theoretical purpose, we will be considering a homogeneous member. Let's see what happens in a homogeneous member. Stresses, what I mean by stresses, I mean two type of stresses out here. ठीक है, एक तो आपका stresses आएगा, कोई भी suppose मान लीजिए this is the beam I am talking about, ठीक है, मान लीजिए कि these are the suppose, okay, and you have given some load, ठीक है, तो ये लोड अगर होगा, ठीक है, if you cut a section out here, अगर आप सेक्शन काट देंगे तो we have already studied this thing. What will happen? एक तो यहाँ रिएक्शन, दूसरा let me draw a 3D view if it's possible. Okay, एक तो यहाँ रिएक्शन, next definitely what will happen, there will be a shear force also resisting, and there will be a movement out here, ठीक है, there will be a movement out here. So because of the shear force and moment, there will be certain stresses which will be developed. ठीक है, यही due to this moment we also studied कि stresses कैसे होंगे. If you remember क्या होगा, हम लोगों ने कैसे stresses calculate किए थे in situation में, it was something of this kind. मतलब F आपका stresses, so my by I. तो shear force के लिए क्या होगा, shear force के लिए आएगा आपका shear stress. shear stress भी हम लोगों ने पढ़ा था, tau is equal to VQ divided by IB. If you remember that, we will not go into the details what are these things. I am pretty sure you know all these things very well. You have studied this in MOS. Okay, so these things you have studied. इसका distribution कैसा था? This is for homogeneous material because we have studied in MOS. MOS में सभी कुछ homogeneous material ही हम लोग ने पढ़ा था. Okay, let's go further. Let's see. So similar thing I have done. क्या होगा, एक beam है, ठीक है, तो beam if you cut a section out here, ठीक है, if you cut a section out here, तो क्या होगा, shear force होगा, definitely एक moment होगा, resisting moment, ठीक है, और definitely यहाँ आपका एक there will be what is this called, there will be a support reaction, ठीक है, y क्या था, m you already do. So if you consider this diagram, let's see, we will study a bit in this diagram, ठीक है, ये आपको समझ में आएगा ये diagram कहाँ से आया, we have studied already. So if you consider this diagram, so based on this the flexural stresses, मतलब flexural stresses को हम लोग we can say bending stresses also. तो bending stresses क्या होंगे इस पे, the distribution will be neutral axis में 0 and it will be tensile forces I have given by red and compressive forces I have given by green. Okay, I'm pretty sure कि आपका compression और tension कौन सा side होगा, अगर you can you know all these things. Okay, so it will be something of this kind, ठीक है, ऊपर compression नीचे tension, ठीक है, आप कैसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्शन आर दिस वे, व्हाटएवर द ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग ऑफ दिस काइंड, मैक्सिमम इन द टॉप कंप्रेशन फाइबर और टेंशन कंप्रेशन फाइबर एंड 0 इन द न्यूट्रल एक्सिस. तो इसका हम लोगों ने क्या किया था, फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस कैसे निकाले थे, ये वाला फार्मूला से, दिस इज डायरेक्टली द
बेंडिंग फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज द बेंडिंग फॉर्मूला। वही चीज स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होंगे, दिस आल्सो वी हैव स्टडीड, लेट्स सी समथिंग ऑफ दिस काइंड, इट विल बी समथिंग ऑफ दिस काइंड एंड व्हाट वी कैलकुलेट VQ डिवाइडेड बाय IB, ओके। V क्या है, Q क्या है, I क्या है, B क्या है। इफ यू आर नॉट श्योर, I suggest you, now I'm not going to say it, I suggest you go back to your mechanics of solid classes and revise it. It is very important to understand. If you have forgotten this, that means you need to revise some of the things, ठीक है। That's why I'm not going into the details of this thing, ठीक है। Okay, so these are the things, ठीक है। This is for what, this diagram is applicable only when if it is a homogeneous material, if it is a homogeneous material, otherwise not. Okay, that's it. Now if I take a if I take a element out here, ये element को हम लोगों ने अगर लिया है, now while understanding the stress distribution, we also have to consider something called principal stresses. आप लोग प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बारे में डेफिनेटली पढ़े, कहा उससे हम लोगों ने मोर सर्कल भी यूज किया था, ओके। सो if you consider this, ultimately everything is related to the stresses, right? So this element, if you enlarge it, it will look something of this kind, okay, it will look something of this kind. तो यहाँ में क्या होगा इस सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन व्हाट विल हैपन कि जस्ट इमेजिन इट, इन दिस सिचुएशन क्या होगा, इन दिस सिचुएशन आपका एक तो शियर स्ट्रेस भी रहेगा एंड फोर्सेस भी रहेंगे, ठीक है। शियर स्ट्रेस भी रहेगा, फोर्सेस, आई मीन इट विल बी बेंडिंग स्ट्रेसेस भी रहेंगे और shear stress भी रहेंगे। In simple, if I want to explain this thing, if there is a beam out here, अगर बीम है, ठीक है ना, अगर आपने कुछ लोड दिया है, तो डेफिनेटली shear force कैसे, shear force कॉर्नर में मैक्सिमम एंड इट विल बी मिनिमम आउट हियर, एंड बेंडिंग मोमेंट कैसा बनेगा, आई एम ड्राइंग इट, लेट मी क्लियर दिस अप. Let me clear this up. Okay. How will be the bending moment? The bending moment will, let's see, the bending moment will be something of this kind. Okay. We have already studied this before. Okay. Now my point is, in this section, there is shear force also, there's bending moment also. That means shear force अगर है तो टाउ आ जाएगा, और अगर बेंडिंग मोमेंट है डेफिनेटली बेंडिंग स्ट्रेस आ जाएंगे। तो बेंडिंग स्ट्रेस इन सिचुएशन में अगर ऊपर हो गया तो अलग है न्यूट्रल एक्सिस का, अगर नीचे हो गया अलग है, ठीक है। मतलब क्या, दिस बेंडिंग स्ट्रेसेस कैन बी टू टाइप्स हियर इन दिस सिचुएशन। क्या हो सकता है, एक कॉम्प्रेसिव भी हो सकता है और एक टेंसाइल भी हो सकता है। सो this is C is denoted by compressive and T is denoted by tensile. So we'll come into that part. Let's see. Try and understand this part. In this situation, there will be shear stress and there will be bending stress also. Now what my point is, अगर ये वाला situation, ये वाला member अगर हम लोगों ने ऑर्थोगोनल कर दिया, you understand, I'm pretty sure you understand how to find out like how our principal stresses develop. So we have converted this to like we have taken in the orthogonally होने से क्या होगा, ultimately दो type of stresses आप लोग को मिल जाएंगे, principal stresses, and I don't have to
explain you what is principal plane or principal stresses. If you think that you are not able to recall, I suggest again you go back or you do any internet searches, anything, you clear up these things, principal stress or principal plane. Okay? Okay. So you can have two kind of stresses out here, F1 और F2 बेसिकली और कुछ नहीं हम लोग ये भी कह सकते हैं हम लोग इस सिचुएशन में we get two kind of stresses, one is the tensile here and one is the compression bending stresses out here. Though I'll give you a better picture regarding this, एक अच्छा एक clearer picture let's give it. Okay, let's see. Yeah, now if you see out here, if you clearly see out here, एक beam है which is subjected by UDL and we have taken two elements. एक हम लोगों ने element कहाँ लिया, neutral axis पे, दूसरा एलिमेंट लिया न्यूट्रल एक्सिस के बिलो. यू कैन ट्राई विथ न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर भी वी कैन ट्राई इट. ओके, सो व्हाट विल हैपन इन दिस वन एलिमेंट. एक पहला एलिमेंट में क्या हो सकता है हम लोग का, एक तो ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस होने से क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस होने से सब स्ट्रेसेस जीरो होंगे. इफ यू रिमेंबर हियर the bending stresses will be zero, but shear stresses will not be zero. Shear stresses will be maximum. Shear stresses is minimum zero in the extreme fiber. Okay. Okay, so that means what I am saying, ये वाला this one, okay, so it will be pure stress, it will be in a pure stress, it will be in a pure stress. Now if it is pure stress, that means your principal stresses will be this only, shear stress, क्योंकि shear stress ही होगा, there is no other stresses out here. So that's why while calculating the principal stresses, we found that something of this kind. Okay, all the principal stresses are shear stresses in the neutral axis. But suppose the second product D and E are below the neutral axis I am talking about. अगर एक element ले ले below the neutral axis, basically क्या होगा, the element will be subjected to shear stress also and bending stress also. If we draw the principal stress out here, it will look something of this kind. That diagram only I have shown you this way. Okay, jahan it will be compressive force. This is the compressive force I am talking about, and this is the tensile forces. That means the element below and above neutral axis will be subjected to tensile or compressive stresses or both simultaneously. Okay. Okay. So you have understood कि shear stresses एक बीम में कैसे आते हैं, ठीक है. Now the problem is based on this shear or based on this whatever stresses you have studied, certain cracks are developed. Now what we are studying, we are trying to study कि ये जो आप लोग का cracks था, these cracks, how they are developed. If you know how they are developed, you can prevent it. Okay. Okay. So the next thing is what we are going to study, how are cracks develop. Okay. These things you don't have to remember anything. Okay. We are not going to the design first. This is just the introduction. You can just understand the concept of it. Okay. How are cracks develop? Now this we have already studied.
ठीक है। अगर पहला सेक्शन ऐसा है कि इफ यू टेक अ सेक्शन, इफ यू टेक एन एलिमेंट आउट हियर, डेफिनेटली इट विल बी एन प्योर शेयर। ठीक है, प्योर शेयर होगा। तो इन सिचुएशन में क्या होगा, द एलिमेंट एट न्यूट्रल एक्सिस इज अंडर प्योर शेयर, दैट इज टाउ मैक्स। ठीक है, but element above and below the neutral axis will be subjected to tensile stress, tensile bending stress or compressive stress and also shear stress। ठीक है, above and below, और below इसमें क्या होगा, डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। जीरो क्या होगा, ये दोनों जीरो, मतलब it will not be there। okay, now if you go further into the situation, what will happen, you can, based on this, we can develop a trajectory। trajectory मतलब क्या, what will be the path of it, path क्या होगा, we can draw it। that means how this is drawn, we have found out कि हर situation पे what will be the 10 principal stresses। now if you found that it looks something of this kind। जैसे यहाँ प्योर शेयर होगा, यहाँ क्या क्या हो सकता है, यहाँ हो सकता है कि टेंसाइल स्ट्रेसेस और टाव हो सकता है। ठीक है, ठीक है। नाउ व्हाट माय पॉइंट इज कि ये ट्रेजेक्टरी पे इफ यू ड्रॉ अ टेंजेंट आउट हियर, दिस टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस एट दैट पॉइंट। दिस पॉइंट you should remember। ओके, trajectory पे ये क्या है, basically what is this entire thing, what is this is the principal stress trajectory। मतलब trajectory मतलब let me draw it, trajectory मतलब क्या होता है, पाथ होता है और कुछ नहीं। ठीक है, let's go into this part। ये एक स्ट्रेस के लिए है तो ये दूसरे स्ट्रेस के लिए, जैसे हम लोगों ने बोला कि द बीम विल बी सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस आल्सो, कंप्रेसिव स्ट्रेस आल्सो। सो द ग्रीन ट्रेजेक्टरी indicates the direction of the compressive stress, this one, and red is indicating tensile stresses out here। तो एंटायर थिंग अगर हम लोगों ने देखा, ये चीज अगर कंबाइन करके देखा, it will look something of this kind। your trajectory is actually this way। ठीक है, but the entire thing which you have studied till now, we have discussed till now, is only concerned with the homogeneous material, but our concrete is not homogeneous। So let's look into this part, how things will work out। now for concrete, as we know, the concrete is weak in tension and strong in compression। तो मतलब क्या, मतलब ये है कि this weak in tension, it will fail through tension only। so tension will develop tensile stresses और ये टेंसाइल स्ट्रेसेस के वजह से there will be tensile cracks। तो basically what I mean, because it is in the tension zone, ठीक है, अगर ये न्यूट्रल एक्सिस है आप लोग का, if this is the neutral axis I am talking about, so this is the tension zone। तो टेंशन जोन में क्या होगा, टेंसाइल क्रैक डेवलप होगा। ठीक है, टेंसाइल क्रैक हो जाएगा ऐसे, और ये टेंसाइल क्रैक कहाँ होगा, दिस टेंसाइल स्ट्रेस विल बी डेवलप perpendicular to the direction of the principal stress। इस डायरेक्शन में आप लोग का क्रैक आना शुरू होगा। now direction of principal stresses you can find out from the trajectory। ठीक है, that is why that part was important। ठीक है, तो लेट्स गो इनटू फर्दर, थोड़ा और फर्दर जाते हैं किस तरह का क्रैक्स होता है। तो यू हैव अंडरस्टूड कि ये टेंसाइल स्ट्रेक अगर होगा तो इट विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। नाउ what are the different type of cracks which are available, which occur in
this in this concrete, ठीक है, concrete member. One, flexural crack. Second one, web shear crack or diagonal tension crack. Third one is the flexure shear crack. Fourth one is the secondary crack और स्प्लिटिंग क्रैक. ठीक है, यहाँ एक एक करके हम लोग कोशिश करेंगे. we'll try to discuss it. Okay, the first one is the flexural crack. Now मान लीजिए forget about this diagram, let's see. Okay. मान लीजिए, let's just a second. Yeah, if a beam is subjected to, let's draw a beam out here. If the beam is subjected to a particular load, ठीक है, simply supported beam है, तो simply supported beam में क्या होगा, हम लोगों ने ये भी कहा था कि the shear force will look something of this kind and bending moment कैसे दिखेगा, इस हिसाब से. ठीक है, now this मान लीजिए at this point, yeah, at this point if you check this point is very low shear force और bending moment relatively high है. तो in this situation your flexural crack will develop. In this situation flexural cracks will develop. Let me repeat it once more again. If there is very high bending moment and low shear force, or very high bending moment and low shear force, तो क्या होगा, this kind of flexural cracks develop. ठीक है, बेंडिंग मोमेंट के लिए बेंडिंग स्ट्रेसेस और फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस आएंगे और shear force के लिए हम लोग के पास shear stress आएंगे. ओके, तो like I said, beam subjected to relatively high flexural stresses and low shear, flexural crack आएंगे. Cracks developed due to tensile stresses are called flexural cracks. ठीक है, तो what is the how these cracks are shown? Flexural cracks do not reach neutral axis. मतलब आपका cracks इस हिसाब से आएंगे पर neutral axis तक नहीं जाएंगे. ठीक है, तो इन तरह का ट्रैक्स कैसे कंट्रोल करेंगे आप, ये वाला रेनफोर्समेंट से. whatever this is given. ठीक है, it will be controlled by the longitudinal transition reinforcement. So what you need to remember out here कि अगर if bending moment is high, shear force is relatively low, then flexural cracks occur. अब ये फ्लेक्सुरल क्या है, न्यूट्रल एक्सिस तक नहीं पहुंचेंगे. इट विल स्टार्ट फ्रॉम द टेंसाइल पोर्शन ओनली. क्यों? क्योंकि दिस क्रैक्स आर डेवलप्ड ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेसेस. सो इट विल डेवलप फ्रॉम हियर ओनली, but it will not reach the neutral axis, and it is controlled by
tension reinforcement. So this is the first crack that we have studied, first mode of crack. Okay. So the next thing is web shear crack, or it is also popularly known as diagonal tension cracks. Okay. So यहाँ क्या होंगे? If the beam is short or the beam is relatively deep and have thin web shear cracks are likely to happen. ठीक है? ये सिचुएशन पे क्या होंगे मैं आपको बता देता हूं. ये सिचुएशन पे अगर आपका मोमेंट काफी लो है, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स काफी हाई है, शेयर फोर्स जिसको V से भी डिनोट किया जाए, काफी हाई है, तो वेब शेयर के डेवलप होंगे. अब कहां डेवलप होंगे? नियर द सपोर्ट. क्यों? क्योंकि जनरली if because of the loading, मान लीजिए I'm just giving an example, if this is the loading, definitely in this portion shear force near the support will be maximum, not in the middle. It will be near the support will be maximum. So just because here and the moment is very low out here, support पे moment काफी कम होता है based on this I mean normal loading condition and type of support. ठीक है? If this situation occurs, then because of shear force, high shear force, high shear stress will develop. क्यों? क्योंकि it is shear stress is also dependent on shear force. So अगर shear force high है तो shear stress भी high है. तो अगर वेब shear cracks develop तभी होंगे जब beam high shear stress में आ जाएंगे, like if it is subjected to high stress. और third point क्या है? Cracking generally starts near the support where shear force is maximum. So what I mean by this, it will start, if this is the support I am talking about, if these are the supports, it will start near the support. It will start near the support. That is the second one. Let's see the third one, flexure shear cracks. That means flexure bhi hai, shear bhi hai. So definitely these beams are subjected, if these beams are subjected to medium moment and medium shear force. Okay? This is the only thing. Okay. Well, okay. One more thing. What this beam is short and beam is relatively having thin wave. Basically, I section. I section मतलब आप लोग generally इसको steel beam में पढ़ेंगे. It looks something of this kind. It looks something of this kind. Okay. These are very thin. These are this way. Okay. This is the web I'm talking about. This is the web. Okay. So something of this kind. Okay. Next, this we have already done. Flexure shear stress कब होंगे? जब medium moment और medium shear force होंगे तब होंगे. Secondary cracks. These are the primary cracks later. Number 4 is the splitting crack or secondary cracks. तो secondary cracks में क्या होंगे? Other than the other three, अगर other three cracks अगर नहीं है तो ये secondary cracks होने का काफी chances है. क्या होंगे? इस तरह का cracks, ठीक है, ये along the reinforcement होंगे, along the reinforcement, ठीक है, और ये इस तरफ से, मतलब basically क्या होगा, it will start from this way and it will reach the support. अब बेसिकली उसमें डायरेक्टली इफेक्ट आता है रेनफोर्समेंट पे. इस तरह का कुछ चीजें होंगे, ठीक है. But these are splitting cracks and all other than this three. So let's see a common diagram, something of this kind, ठीक है.
maximum bending moment out here to flexural crack. अगर फ्लेक्चर और shear दोनों चाहिए तो मीडियम shear force और मीडियम m, ठीक है. सिमिलरली इन दिस सिचुएशन, ठीक है. किस हिसाब से आएंगे आप देख सकते हैं. इंक्लिनेशन, हाउ विल बी द इंक्लाइन कैसे होंगे, कहाँ से शुरू होंगे. और अगर वेब शेयर है जो हम लोगों ने बताया था कि इट विल स्टार्ट फ्रॉम द सपोर्ट, इट विल जनरली गो दिस वे, समथिंग ऑफ दिस काइंड. This other part we have shown it for the continuous support. अगर continuous beam होगा तो कैसे होगा. continuous beam में shear force भी maximum होगा, bending moment भी maximum होगा. तो इन सिचुएशन पे कैसा बिहेव करेंगे, दिस वी हैव शोड. ओके. नेक्स्ट विल बी डीलिंग विद द shear failure. अगर हम लोगों ने shear reinforcement नहीं दिया तो किस तरह का सा बिहेव करेंगे एंड हाउ आईएस कोड हैज कोडिफाइड इट. आईएस कोड ने कैसे उसको कोड में रेफरेंस दिया है. लेट्स सी. ठीक है. So okay, here we'll discuss the behavior of the beam without shear reinforcement. The behavior of the beam failing in shear may vary widely depending on the ratio of A by D. A क्या है उसमें shear span है, which is roughly M by V, ending moment by shear force, to effective depth and the amount of wave reinforcement. Okay. Now in this situation, let's see how it depends upon shear failure. किस पे depend करता है A by D ratio पे. So there are three kind of failure modes based on the A by D ratio. अगर A by D less than 1 हो गया, that is one type of failure. A by D is between 1 and 2.5. And second one, I made a mistake out here. Let's see. Please correct it in the video, I mean on your PDF. Third one is between 2.5 and 6. Okay, we'll see one by one what happens if this kind of things. The first one, if A by D is less than 1. If A by D is less than 1, then it will behave as a deep beam. Okay, or दो तरह का, there will be two ways of failure. There may be two kind of failure. One, compression cord breakdown of the entire compression cord. Second one, breakdown of the reinforcement itself. Very, very dangerous. Okay, very, very dangerous. So this kind of things will occur. Either it will be breakdown of this one, or it will be breakdown of the reinforcement. ये कब होगा? When will this occur? If A by D is less than 1. A by D less than 1 होने से दो पॉइंट होंगे. एक तो डीप बीम होंगे. डीप बीम क्या है, we'll discuss later on. ठीक है. And second one, it may fail by two types of failure. One, either breakdown directly compression cord से होंगे इस प्रकार, और नहीं तो टेंशन reinforcement ही फेल हो जाएंगे. It will be breakdown in the tensile reinforcement. Okay. The second one is if A by D is between 1 and 2.5. तो क्या होगा? The beam will develop inclined cracks initially, जो हम लोग फ्लेक्चर शेयर फेलियर भी हम लोग कर चुके हैं. तो इन सिचुएशन में क्या होगा? अगेन दो फेलियर हो सकते हैं. अगर आपने लोड इस हिसाब से दिया, इफ यू गिव अ लोड, सो व्हाट विल हैपन, दिस कंक्रीट जो आप यहाँ दे रहे हैं, दिस कंक्रीट विल बी रिड्यूस्ड. ठीक है. ये कंक्रीट मतलब क्रैक होते होते यहाँ में एक रिडक्शन, एक कंसंट्रेशन हो जाएंगे, और इस फेलियर को हम लोग शेयर कंप्रेशन फेलियर भी कहते हैं. ठीक है. दिस इज लेट मी शो यू. द कंक्रीट विल बी रिड्यूस हियर, मतलब क्रैक होते होते द कंक्रीट विल बी रिड्यूस हियर एंड दिस विल फेल. This failure is called as shear compression failure.
How it occurs? It will be occurring crushing of the reduced concrete. This is the reduced concrete I am talking about. Okay. और दूसरा फेलियर कौन सा हो सकता है? दूसरा फेलियर हो सकता है shear tension failure. Shear tension failure में बेसिकली क्या होगा? क्रैक्स आपका रेइनफोर्समेंट के along, मतलब रेइनफोर्समेंट के थ्रू बोलिए, रेइनफोर्समेंट के along बोलिए, मतलब इस हिसाब से आपका प्रोपेगेट करके रेइनफोर्समेंट को फेल कर देंगे. दिस इज ऑल्सो अ फेलियर. ये कब होंगे? ये दोनों कब होंगे? जब a by d इज लेस देन 2.5. ठीक है. सेकेंड, third one, if 2.5 is less than a, I mean if a by d is between 2.5 and 6, क्या होगा? फ्लेक्सर टेंशन क्रैक डेवलप होंगे पहले, और सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट विल हैपन? द क्रैक्स विल स्टार्ट फ्रॉम हियर डेफिनेटली, क्योंकि टेंशन क्रैक है, और सीधा ऊपर तक जाएगा टॉप ऑफ डिवीजन. ठीक है. तो इस तरह का फेलियर अगर कहीं दिखे आपको, तो यू विल अंडरस्टैंड कि इट इज अंडर दिस कैटेगरी. ठीक है. So that means while designing, sometimes if you design for shear, you have to keep in mind this part. ठीक है. You have to keep in mind this part कि ये अगर इस सिचुएशन पे आ जाए तो you have to be ready because of this. ठीक है. And this is very dangerous. Why? Because it occurs suddenly. Failure. Every shear failure occurs suddenly, but this is a bit more dangerous. Okay. ये 6. Now अगर मान ले जो यहाँ दिया नहीं है, if a by d is greater than 6, तो क्या हो जाएगा? ये shear failure तक पहुंचेगा ही नहीं, ये फ्लेक्सर फेलियर ही हो जाएगा. ये फ्लेक्सर फेलियर पहले ही हो जाएगा. डोंट वरी अबाउट दिस. आई मीन यू शुड बी वरिंग, बट लाइक पहले ही ये फेलियर shear तक पहुंचेगा ही नहीं अगर इससे बियॉन्ड चला गया तो. ठीक है. This I have not included in the notes, but you can just remember it. You can see a picture out here. This is a real beam. Okay. Shear force यहाँ लिखा हुआ है 172 kilonewton, something of this kind. So you can give it a thought कि किस हिसाब से ब्रेकेज हुआ. ब्रेकेज मान लीजिए कि एक चीज याद रखिए, ब्रेकेज आपका ऊपर से नीचे तक नहीं हुआ. इट स्टार्टेड फ्रॉम द सपोर्ट. ठीक है. इट इज टोटल टॉप ऑफ द बीम. यहाँ कुछ इस प्रकार से हुआ. ठीक है. इफ यू सी दैट इट इज इंक्लाइन. ठीक है. Here if you see it is directly almost perpendicular. These are the flexure crack. ठीक है. आप अगर उस डायग्राम, जो डायग्राम we have shown, and this is a real diagram, you can see. Give it a thought. कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ. अगर आप लोग को डिस्कशन करना है, you can also discuss with me in the Google Classroom. We'll definitely find. Just try to find out the pattern. It is very interesting. Okay. There is a problem if you see here. I just want to remember एक भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एक बीम है जिससे shear crack almost हो गया है. So you can keep in mind in that part also. While seeing that, you can understand what are the situation which are prevailing. Okay. Okay. The last part of this lecture is the nominal shear. This is the last part, and we'll continue in the next class also. If you are concerned, what I'm saying, if you are concerned only with the design numerical, आप लोग अगर design numerical से शुरू करना चाहते हैं, तो this will be the first thing that you need to understand. ठीक है. ये जो part था, this is also necessary as an engineer. But if you are concerned with like any other exams or competitive exam, this is this part is the first part. Okay. And from here everything will be required. I mean everything will be directly applicable in your competitive exam.
I'm just saying. Otherwise, but I'm not saying that the other part जो हम लोगों ने अभी तक discuss है, this is not important. This is extremely important. People usually miss it, but ये, but when they are employed as an engineer, this becomes a big problem. ठीक है? Because they understand only the IS core part, but they do not understand the concept behind it. Okay. So what happens? Nominal shear. Okay. Like I said, जो हम लोगों ने when we studied shear force, when we studied shear stress or shear, we studied for a homogeneous section, but concrete is a altogether a different material, not a homogeneous material, so things have to be modified. So पेज नंबर 72 क्लॉज नंबर 40 के हिसाब से एवरेज शेयर क्या होगा? शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया. It will depend on the cross sectional area, also the shear force. Now that means it also depends variably on the cross sectional area. मतलब cross sectional area पे आपका एवरेज शेयर डिपेंड करता है. तो ये एवरेज शेयर पे हम लोग के पास दो ऑप्शन है. ठीक है? दो ऑप्शन क्या है? वन ऑप्शन इज प्रिज्मेटिक मेंबर्स जहां कांस्टेंट डेप्थ है, और मेंबर्स with varying depth. So let me show you what I mean by that. I mean प्रिज्मेटिक मेंबर कौन सा होता है? जहां डेप्थ आपका सेम होता है. जिससे मान लीजिए कि दिस इज द बीम आई एम टॉकिंग अबाउट, ऑल एवरीवेयर डेप्थ इज सेम. डेप्थ इज ओके, कैपिटल डी, डेप्थ इज सेम. बट वेरिंग डेप्थ में क्या होगा? वेरिंग डेप्थ में आपका कुछ इस प्रकार से होगा. मान लीजिए इस प्रकार से, where depth are different. So both analysis are a bit different. I scored अलग-अलग formula दे के रखा है. So let's begin with the first part. For prismatic members, if it is a it is given in clause number 40.1. I'm pretty sure it is in page number 72. Okay. तो क्या कहते हैं? Nominal shear is given by VU divided by BD. Now VU, remember, it is a factored SF. Okay, factored मतलब आपका अगर किसी भी कारण मान लीजिए कि your V जो count to be 100, V मतलब shear force अगर 100 दिया गया है, आपका VU कितना होगा? फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So this only you can put it out here. That not this one. Okay. So VU divided by BD. B क्या है? width of the beam. अगर फ्लैंज बीम हो गया तो डेफिनेटली BW यूज करेंगे. ठीक है. इफेक्टिव width of the flange कैसे कैलकुलेट करना है? We have already discussed in the last class. This is the effective depth of the beam. अगर प्रिज्मेटिक मतलब डी अगर सब में सेम हुआ तो. ठीक है. इन सिचुएशन में क्या होगा? आप अगर ध्यान से देखें इस चीज को. ठीक है. दिस पार्ट यू नीड टू रिमेम्बर. इफ दिस इज अ रेक्टेंगुलर बीम, सो योर एक्चुअल ग्राफ कैसा होगा? इट विल बी पैराबोलिक टिल हियर, न्यूट्रल एक्सिस, एंड इट इज कांस्टेंट यहां तक. ठीक है. दिस आर समथिंग, दिस इज द पैराबोलिक पार्ट. नाउ बट इफ यू, बिकॉज ऑफ आई स्क्वायर ने क्या रखा? आई स्क्वायर ने बोला कि यू कंसीडर एज यूनिफॉर्म graph for it. Uniform graph matlab they have reduced, they have rearranged the graph something of this kind. Matlab pehle parabolic tha, this part also they have reduced, and this part, the value of this is actually tau v. This is the tau v I am talking about. पहले tau v कितना था? It is different. यहाँ different था, यहाँ different था, यहाँ different है. ठीक है. It was different, but I could say you do not use this. You use a simple constant uniform tau v, which is VU by BD. So this is the first formula that we'll be using. Now, if it is a varying section, clause number 40.1.1, I think so page number 73 में दिया गया है. You can check it. A varying section मतलब something of this kind, जहां स्लोप का एंगल दिया जाएगा. शेयर फोर्स आपको पता होगा.
लीवर आर्म ये है, बट लीवर आर्म और डेफ्ट ऑलमोस्ट यू कैन कंसिडर द सेम, ठीक है। नाउ अगर ऐसा सिचुएशन हुआ, ठीक है, तो यू योर फॉर्मूला इज गिवन बाय वी यू प्लस माइनस एम यू बाई डी टेन बीटा डिवाइडेड बाय बी डी। नाउ प्लस माइनस कहाँ यूज करना है? Plus is applicable when mu decreases numerically in the same direction as d increases, ठीक है। एंड माइनस कहाँ यूज करना है? इट इज एप्लीकेबल when the mu increases numerically in the same direction as d increases। मतलब प्लस तभी यूज करना है जब mu decreases as d increases, d मतलब इफेक्टिव डेप्थ, और निगेटिव तभी यूज करना है जब mu increases, okay, when mu increases in the same direction as d increases। तो यहां से आप लोग ये बता सकते हैं कि what this this is a homework for you। इन दो डायग्राम्स में मतलब अगर आप थोड़ा सोचे, कैन यू फाइंड आउट कहाँ माइनस होगा कहाँ प्लस होगा, ठीक है। हालांकि एज पर योर बीटेक सिलेबस राइट नाउ यू हैव टू वरी अबाउट ओनली दिस पार्ट, not the varying section, okay, but for your knowledge this can be used, otherwise this is enough for you, okay। So what we have done till now, we have done shear stress in concrete कैसे behave करता है, cracks कैसे develop होता है, behavior of concrete, reinforced concrete, cracks कैसे develop होता है, क्या characteristic होता है, and nominal shear। Next we'll be discussing critical sections, shear design के लिए डिजाइन ऑफ शेयर शुरू कैसे होता है एंड प्रोसीजर मतलब स्टेप्स हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।